And let's begin by getting you all the updates that came in yesterday. The news that shocked the nation of global Punjabi rap star Sidhu Moose Wala being shot dead in Punjab. And mind you, this happened just a day after the Bhagwant Mann government had actually curtailed its security cover and boasted about it on social media. Politics has broken out on this issue. The investigation is picking pace, but it looks like at this point there's a gang war that's emerging in this entire case. First, a report on all the details you need to know on this horrifying murder. A cold-blooded murder in broad daylight. Punjabi pop star and Congress leader Sidhu Moose Wala was shot dead on Sunday when suspected gangsters pumped bullets into him. The singer's body and the SUV carrying him was found riddled with bullets fired from as many as 3 weapons. Chilling CCTV footage of a car trailing Moose Wala's car was accessed. In the images, a white SUV is seen tailing Moose Wala's vehicle moments before the murder. Moose Wala, who was seriously injured, was declared brought dead at the hospital. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਇੰਜਨ ਨੇ 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗਨਸ਼ਾਟ ਵੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ Moose Wala's gruesome murder comes the day after the Aam Aadmi Party government stripped away his security cover, despite a clear gang threat to him. Bhagwant Mann ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 3 ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ His bereaved mother has blamed the AAP government's incompetence, holding it responsible for the murder. ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭੱਜੂਗਾ ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ आज ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਅਵਾਰਡ Fellow singer Mika Singh revealed that Moose Wala repeatedly feared for his life while speaking to him. कि पाजी मैं तो मुंबई में घूम रहा हूँ यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं यार अकेला गाड़ी में घूमूं कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती कोई बंदा घूर के नहीं आपको देख रहा तो मैंने यही बोला था कि यार आने वाले टाइम में तो इधर ही रुक जाकर मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा उसके साथ होने वाला और वो 4 साल पहले भी यही बातें करते थे कि यार मुझे ऐसे गैंगस्टर ने धमकी दी है ये दी है वो दी है Punjab's DGP revealed that 4 Punjab commandos were allotted as security for Moose Wala, but this was reduced to just 2 after the AAP government's directive. ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है Notorious gangster of the Bishnoi gang Goldie Brar has claimed responsibility for the murder seen as a revenge killing for a 2021 gang murder. शगनप्रीत इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है Punjab cops have now formed a special investigation team to nab the killers. With Manjeet Sehgal and Lalit Sharma, Bureau Report, India Today. Moose Wala's family, for obvious reasons, they're inconsolable. And his mother came out to speak to the media, pinning the blame squarely on the AAP government, saying that this is a failure of law and order by the Bhagwant Mann government. The reason for that, let me highlight again, is that Moose Wala's security was withdrawn on Saturday. It was made a full-blown public affair, with the government even putting out a social media post boasting about the fact that they've removed and withdrawn security cover for VVIPs in the state.
ਮਰ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 3 ਬੱਚੇ ਪਏ ਆ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕੇ ਦਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਕੇ ਦਰਵਾਇਆ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ किस तरह की हालत है माता सिद्धू मूसे नु देख तीन कौन ने जी हालात क्या है जने किमें सिद्धू मूसे वाला ठीक है जी Let's get you a live update from the ground. Shreya Chatterjee is joining us live from Mansa in Punjab. Shreya, what shocked the entire country is that he's a superstar. Moose Wala enjoys cult status in Punjab, and yet here he was travelling in a black Thar without any security and was shot dead in broad daylight in what's considered to be a busy part of Mansa. Well, exactly so, Akshita, and I'm standing at that very spot where Sidhu Moose Wala was gunned down. This is the Jawaharke village of the Mansa district, and this is the spot, Akshita, that I will show you where Sidhu Moose Wala was gunned down yesterday at around 5:21 p.m. The Thar vehicle, we know, was intercepted by 3 other vehicles. There were 2 vehicles in front, 1 in behind, and I mean, from the front, the shooting happened. Now, look at those visuals on the wall. The bullet marks that are still evident of the kind of attack that took place at Sidhu Moose Wala. We do know that 30 rounds of fire of the bullets were actually fired at him. There were 3 different kind of weapons that were used to attack Sidhu Moose Wala. He was travelling with 2 others who were immediately also rushed to the hospital and have now been referred to Patiala. But this is the spot, Akshita. Just see, this is a busy stretch. You can see that bike-borne vehicles are moving. You can see tractors moving. So this is not a stretch which remains empty, where people hardly travel. This is a stretch where there is, I mean, heavy movement of vehicle, and that's also evident from the CCTV that has been out since yesterday, that apart from Sidhu Moose Wala's vehicle, there were other vehicles were also travelling from this very stretch. What points out the question was that the lapse in the security, because on one side the Punjab Police says that the security wasn't completely withdrawn. There were 2 security that was there with him, but he chose not to take the security, and also he chose not to travel with the bulletproof car. So definitely there was a part of an information leak that also might have happened, or the cars that were actually intercepting Sidhu Moose Wala's Thar might have been just following him for quite a long time. So there is a question on the security lapse that the Punjab Police will have to answer. Yes, they say that because of the Gallu Ghara week, this is a routine task of withdrawing security. However, this is no answer to the fact that just a day after the security of Sidhu Moose Wala was reduced, that this dastardly attack take place on him on a very busy stretch. Over to you, Akshita. How crowded that entire area is on a normal day, Shreya. As you stand there, I see multiple vehicles going around, a lot of people on that road, and that's where a man who's nothing short of a superstar was shot dead in broad daylight in Mansa. Shreya, stay on with me. I want to play a report that you filed for us earlier. This shows the vehicle. He was travelling in a black Thar. Moose Wala was driving the vehicle when he was shot at, when he was shot dead. What we're hearing is that nearly 30 rounds were fired at the vehicle that he was travelling in. Let's get you that report that Shreya's filed, where she shows the black Thar, and you can see the bullet holes very clearly. It was around 5:21 p.m. when Sidhu Moose Wala was shot at in this very Thar.
He usually used to drive in a bulletproof car, but yesterday he chose to leave two of the security that was provided to him and his bulletproof car and travel in this Thar. Now, preliminary investigation has revealed that 3 weapons, including a 7.62 mm, 9 mm and 0.30 bore weapons were used to fire at this vehicle. Remember, Sidhu Moose Wala was traveling along with 2 of his cousins when he was attacked at Jawaharke village. By the look of the attack, you can understand how dastardly it was. Around 30 rounds were fired at this very vehicle. You can see the bullet marks that are still the witness to the attack, the kind of attack that took place at Sidhu Moose Wala. Remember, he was sitting at the driver's spot where he was shot at. The glass shards reflect the intensity of the attack that took place at Sidhu Moose Wala. Look at these bullet marks on the Thar vehicle. This will give you an idea of the attack that took place. Remember, initial investigation has revealed 30 rounds were fired. The police is also trying to say that this is in prima facie gang war. But you see, the tires have deflated completely. Both the tires in the front had deflated. Now that had also caused difficulty for, I believe, Sidhu Moose Wala to probably travel forward. See, both the tires are completely deflated, and this vehicle is a witness to the kind of attack that actually took place at Sidhu Moose Wala. With video journalist Pradeep Gupta, this is Shreya Chatterjee for India Today. Sidhu Moose Wala, the Punjabi rap star, the superstar, was also known to be rather controversial, and there were hints that he was involved in some sort of gang war as well. At this point, the initial investigation does in fact reveal that it's perhaps the gang war that really led to his killing. According to sources, Punjab's wanted gangster Lawrence Bishnoi and his gang were behind the killing of Moose Wala. As per cops, notorious gangster Goldie Brar was also involved in the murder. Interestingly, Goldie Brar actually went public to take responsibility and then took a U-turn, denied all the allegations of having any role or being part of this murder at all. Sources have claimed that the singer, the rapper, was killed in connection with the murder of a gangster called Vicky Midukhera, who belonged to the Lawrence Bishnoi gang. Midukhera was gunned down in August 2021. Sidhu Moose Wala's manager, Shaganpreet Singh, was accused of the murder. Shaganpreet Singh, again let me highlight, he's Moose Wala's manager. He's been absconding since the murder and has been living in Australia. So this could be an act of revenge over a member of Bishnoi's gang being murdered back in 2021. जब जवाहरके पिंड पहुंचे है कि वो थार गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਵੂਨਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ Now, we also had a detailed conversation with another superstar, Punjabi singer Mika Singh, who was a good friend of Sidhu Moose Wala. He made several startling revelations here on India Today. In a detailed conversation, he spoke about how in several conversations that he had with Moose Wala, the Punjabi rap star mentioned that he felt there was a threat to his life, that he was receiving threats from some gang in Punjab. Here's the full conversation that we had with Mika Singh. It could have been some kind of extortion by some gang, some attempt to extort from him, because reason we are asking Mika ki ye jo murder jo hua hai Sidhu Moose Wala ka, it has happened the day after his security was withdrawn. Iska matlab hai ki जिसने भी सिद्धू मूसेवाला को मारा है, he was aware कि उनका सिक्योरिटी विड्रॉ हो चुका है अभी. वही है ना, जैसे सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ, आप दूसरे दिन ही तो हर न्यूज पे आ जाता है कि उस सिंगर की या उस पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी हट गई है. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों सिद्धू मूसेवाला
बाकी की तो सिक्योरिटी हटी हुई है। अब इसमें जिसने भी गेम चालाकी से खेली होगी उसको यही लग रहा है कि ठीक है यार मैं अपना काम कर देता हूँ, लोग बोलेंगे उसने करा होगा, और इसके जरिए मैं बाकी सिंगर्स को बोलूंगा कि ठीक है जी कल मैंने उसको मारा है, अब तुझे मारेंगे, अब पैसा देना शुरू कर। बट एक बंदे की जान चलेगी। मुझे लगता है कि पुलिस को और सरकार को बहुत तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। इट इज नॉट ओनली सिद्धू मूसेवाला, इट इज फॉर जो आम जनता बेचारी वो क्या करे जाके। मीका रिसेंटली क्या बिजनेसमैन को भी वो टारगेट करेंगे? नहीं, रिसेंटली क्या सिद्धू मूसेवाला ने आपसे कोई बात कही थी किसी थ्रेट के बारे में? आप कह रहे 4 साल पहले किसी गैंगस्टर थ्रेट के बारे में बताया था रिसेंटली। हाँ, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, मुझे लंदन में मिले थे, उन्होंने भी बोला यार ये बहुत नया सिस्टम शुरू हो गया कि यार मैं हूँ, 2-4 और सिंगर्स हैं जिनको ऐसे कॉल आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उनके साथ कैसे डील करें। तो मैंने उनको वैसे ही बोला था कि यार तुम वहाँ रह रहे हो, तुम इधर ही आ जाओ, मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, तो यहाँ पे अपना जितना मर्जी काम। यहाँ तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार रहते हैं, उनको तो कभी कोई धमकी नहीं आती और अपना काम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने बहुत नाम कमाया, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आई फील वेरी सेफ इन मुंबई। तो बोलता नहीं मुझे गाँव में रहना है, मुझे गाँव से प्यार है। दिस इज व्हाट वो लास्ट टाइम बोल रहे थे। पर वो डर महसूस करते थे पंजाब में? 100% करते उनको जान और ये सब तभी कोई सरकार भी अलग थी। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आज की सरकार को मैं ब्लेम करूंगा, पिछली सरकार को करूँ। इसमें सरकार का दोष नहीं, इसमें एक ही चीज का है कि सरकार या पुलिस अगर इस चीज को सीरियसली ले ले कि हमने इसको ठीक करना है, तो वो 1 सेकंड का काम है। ये चीज दिल्ली या मुंबई में क्यों नहीं हो रही? तो उनको महसूस होता था, जान को खतरा महसूस होता था उनको, ये उन्होंने आपसे कहा है? 100% होता था। उनके अलावा और भी सिंगर्स हैं, मेरा एक छोटा भाई है गिप्पी गरेवाल, उसके साथ भी हुआ है कि उसको भी शायद सिक्योरिटी मिली थी पीछे, उसको भी यही प्रॉब्लम आई थी। उनको कॉल आ गया था, पहले वो पैसे मेरे ख्याल दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने फिर कंप्लेन करी, शायद अभी बंद हुआ। तो ये जो भी गैंगस्टर आते हैं ये अपना उनको जेल के अंदर से ही उनको धमकियां देते हैं और जब वो प्रोल पे या बेल पे बाहर आते हैं अपना फिर कांड करते हैं, फिर अंदर चल जाते हैं। निका जी, जस्ट couple of last questions just for clarity, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं this takes the story to a very much more serious level, sir. So I just want to clarify this. You were saying that Sidhu Moose Wala had spoken to you and said that he and some other people like him, Popstar जो हैं पंजाब में, they are facing threat. There is a threat to them. He said that to you personally. 4 साल पहले उन्होंने लंदन में मुझे बोला था कि यार ऐसी प्रॉब्लम आ गई है पाजी, आपके साथ कभी ऐसा होता? मैं यार मैं शायद पंजाब में कम रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे कभी हुआ नहीं है और जब कभी हुआ तो मैं सीधा कंप्लेन करता हूँ जाके, जो मुझे अच्छा लगता है। बट पंजाब में सिस्टम शायद ऐसा नहीं हुआ कि आप कंप्लेन करो, क्योंकि जैसे परमीश वर्मा पे भी गोली चली थी, आपको याद होगा जी। एक परमीश वर्मा करके सिंगर है, उनको भी अभी 3 साल पहले उन पे भी गोली चली थी जी। तो उनका भी यही था कि गैंगस्टर आराम से अपने जेल से उसने फोन करा कि ऐसा कर दो, उसने नहीं करा तो उसको गोली पड़ेगी। Mika ji, last week जब when Sidhu Moose Wala was in Bombay and he met with you, क्या इसके बारे में कुछ भी hint था? Did he talk about any threat, any concern about life in Punjab, any threat to him? इसका कोई भी hint था क्या? मुंबई में आए थे अभी जस्ट 4-5 दिन के लिए आए थे, तो मेरी जोधपुर में शूटिंग चल रही थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि यार तुम मेरे घर पे रुका करो और तुम सोचो कि तुम्हारा पंजाब यहीं पे है और यही जो तुम्हें खाना पीना, जैसे हम पंजाबी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो वो यही बात कर रहा था कि यार यहाँ से कमाल है, हम आराम से घूम सकते हैं और इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिखता नहीं था, तो मतलब मैं अकेला ही गाड़ी में घूम रहा हूँ। ये ऐसी पूरी खुल के बात उसने नहीं करी, बट आई विश कि मैं उसको मिल पाता या उसकी बात समझ पाता। क्या आप ये मानते हैं कि एक तरह से जो सिक्योरिटी कवर सिद्धू मूसेवाला का कल ही बस विड्रॉ हुआ था, ये बात सामने आना, कॉन्फिडेंशियल लिस्ट का सामने आ जाना, सबको पता चल जाना कि किन किन लोगों का सिक्योरिटी कवर विड्रॉ हो रहा है, एक तरह से जो लोग बैठे हुए थे शायद उनको एक मौका मिल गया? बस नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, जिसको भी मौका मिला उसको मौका सिद्धू मूसेवाला को क्यों मिला? 400 लोगों की सिक्योरिटी हटी है तो किसी के साथ भी होना चाहिए, ये हो सकता था। वाई सिंगर को टारगेट करो कि ठीक है यार इसको टारगेट करते हैं, सॉफ्ट टारगेट है, इससे शोर भी मच जाएगा और कोई भरोसा भी, किसी पे शक भी नहीं होगा, अपना हम काम कर लेंगे, कल को हम ऐसे लोगों को और परेशान करेंगे, उससे पैसे मांगेंगे। तो आपको लगता है कि और भी लोगों को, इस तरह के आर्टिस्ट को जान का खतरा हो सकता है? मुझे लगता है कि 50% ऐसे चांसेस हैं कि बहुत सारे सिंगर्स बेचारे अभी जो भुगत रहे हैं वहाँ पे, तो शायद मुझे लगता है उनको सामने आना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस भी आपकी हेल्प के लिए बैठी है, जब आप बताओगे नहीं, आप डरते रहोगे समवेयर। अब डरना जरूरी भी हो गया, क्योंकि
अगर हम सिद्धू मूसेवाला को देखते हैं, उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ, तो हर आदमी डर जाएगा। Now, singer Mika Singh, soon after speaking to us, also put up this video that you see on your screens. It's a tribute to Sidhu Moose Wala, requesting the Punjab government to take stern action against the culprits. Mika paid tribute to the 28-year-old singer who was brutally murdered. आज ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਅਵਾਰਡ ਸੋ ਬੈਸਟ ਸਿੰਗਰ ਦ ਬੈਸਟ ਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ Several tough questions that are being asked of the AAP government, of the Bhagwant Mann government, over the murder of Sidhu Moose Wala because of the fact that the security cover was withdrawn just a day ago. And political parties have latched onto this to question the AAP government and the law and order situation and on what basis this singer's security was withdrawn. Now, let's get you some of the reactions that have come in. Both the BJP and Congress blaming the Mann government for this particular murder. BJP leader Manjeet Singh Sirsa, getting emotional, claimed that action should be taken against Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann. BJP has also alleged that the killing of Moose Wala was a result of the Punjab government's failure. Congress leader Pratap Singh Bajwa demanded the resignation of Mann and also sought an explanation of the basis on which Moose Wala's security was withdrawn. Former Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh cornered the government, claiming nobody is safe under this AAP government. का जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने ये कहा कि मुझे एक बार पुलिस दे दो। आज उनको पुलिस मिली। मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को पुलिस देने का क्या हश्र हुआ। कल 450 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई। लेने के बाद उस लिस्ट को जनतक किया गया वाहवाही लूटने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा, और बार बार टीवियों पे जा जाके, सोशल मीडिया पे जा जाके मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था कि आप ये लिस्ट सार्वजनिक कैसे, मतलब पब्लिक डोमेन में कैसे डाल सकते हैं। आप कैसे लोगों को बता सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा हमने वापस ले ली। सुरक्षा वापस लेना आपका काम है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी चीजों को कैसे डाला सकता। मैंने कल ही कहा था कि लोगों की जान को खतरे में डाल दिया आपने। सिद्धू मूसे लोगों को बता दिया, जाइए सिद्धू मूसेवाले को मार दीजिए, उसके पास सुरक्षा नहीं है। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी अभी एक रोज पहले, 400 से कुछ ज्यादा लोगों की, उनकी उस लिस्ट को अखबारों में प्रकाशित किसने किया, क्यों किया? भगवंत मान जी खुद ये स्पष्ट करें कि ये लिस्ट किसने और क्यों जारी की, और एक न्यायिक जांच की इसके ऊपर मांग की जाए कि कौन लोग थे जिससे इस लिस्ट से प्रेरित होकर जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। And that's the reason as to why we are seeing the situation that we are seeing in Punjab. People who don't know what Punjab is, people who don't understand Punjab, they are the ones who are remote controlling the politics of Punjab, the government of Punjab, sitting in the thrones, in the high thrones of Delhi. Arvind Kejriwal or Raghav Chadha.